one restriction is there, that operating system can allows only one user at a time. Simultaneously, that operating system is not capable to allow multiple users. Clear? So one is single user, single tasking operating system. Another kind is single user and multitasking operating system. And other kind of operating system is that is multi-user. What is multi-user and multitasking operating system? Multitasking operating system. This is multi-user and multitasking operating system. This operating system, but this type of operating system allows multiple user. And generally, this kind of operating systems are, you can see this type of operating system, in networking case. In networking, in server room there is a system, and that server room, that system is attached with multiple systems, and that multiple systems is known as the client. I mean, it lekhu chiti ki gote server rele server. So it pachari sir server kon. Student, server is a program you can say, or server is a system you can say, and that system is responsible to serve multiple other systems. Server is a program which provides the files to other programs about other systems. Suppose it is a server. The server which serves seva karibo. The multiple computer attached. These are known as the client. Multiple computer attached. Saha computer attached. This is known as the client. Client. Clear? तो क्या कौन कहते client. The server is a program or server is a system which serves multiple programs. A server is a system which provides the program files to multiple computers, and that computers, the computers which received, the computer which fetched, the computer which are what is the computers which are surrounded by the which are the multiple computers which are here to receive some files from the server is known as the client, and server is a computer which is responsible to provide files to the client. This is client server principle ame कहउछन्ती. तने एठी जो operating system ame पकाइबा, and that operating system is the multi user and multitasking operating system. Client 1, a client 1 जो काम करूथबो client 2 से काम करू नथु, and client 3 job is different. ये different jobs. Okay, so here different users do the different jobs, and one user can perform multiple tasks. It means that the operating system which are inside the server allows multiple users to perform the multiple tasks. One user can perform the multiple tasks, and it can allow the multiple user, means multiple user and multiple tasks. So one user can perform multiple tasks. It is user, use task mu rakili. Sei bhali au gote user thibo, se be multiple tasks perform kala. Clear? Au gote user rahila, se multiple tasks perform karuchi. This type of eita ko jodi total jane allow karuchi, tale that type of operating system is known as multi user and multitasking operating system. Clear? And this kind of operating system generally seen in case of networking. Network कहले कौन बुझे? Network कहले कौन बुझे छुआ? The network is the interaction of by interconnected of multiple computers
to perform any jobs as together is known as a network. What is network? Network is the interconnected by interconnection of multiple nodes. Node, NODE. कौन कहते हैं nodes. Nodes बात आपको हमें computers बोली कहते हैं बाप any type of peripheral type device like printer, scanner. These are some nodes. हमें तक कोई परिया. तो networking. What do you mean by the network? Network is the interconnection of multiple computers to perform a job or perform multiple jobs as together. Is known as the networking. So in case of networking, you can find such type of operating system, and that operating system allows the multiple user and multitasking. Okay, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल जॉब्स परफॉर्म करथुबो एवं मल्टीपल यूजर को कंकरेंटली. व्हाट डू मीन बाय कंकरेंटली? एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ए गोटे समय 5 जन यूजर यूज लागिथिबे एवं 5 जन यूजर 5 प्रकार काम करथुबे. दिस इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अनदर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टी प्रोसेसर. मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. Multi-processing operating system. What is this? Multi-processing operating system. Students, what is processor? Processor is the generally very popular name processor. आम ताको कहते CPU. CPU टाको कहते processor. Multi-processing operating system. It means that operating system can handle multiple processor. There is एठी आमे गुटिए प्रोसेसर विषय आलोचना करिक आसले. सिंगल प्रोसेसर गोटे गोटे सीपीयू थिले. क्लियर? एठी जते प्रकार कंप्यूटर विषय आलोचना कले तीनटा केस रे एठी वन सीपीयू इज देयर, वन प्रोसेसर आर देयर. बट इन केस दिस सिनेरियो इज डिफरेंट फ्रॉम देयर. इन केस you can find multiple processor, multiple CPUs are there. What is the use of multiple CPU? कहीं multiple CPU करिया? Suppose one complex task is allotted to the computer. Clear? And that complex task is integrated with some multiple modules. What I count for? Multiple modules. Okay. multiple part को integrate करके gather करके गोटे task तैयार कराइछ. एठी कोन होछि ना different module को differently play कले किछ असुविधा नाही. Clear? Every individual module can run individually. Means every individual module can run independently. One module is not dependent with other modules. Yes, one module is related to the other modules, but one module can run independently. गोटे मॉड्यूल स्वाधीन भाव में निजे रन हो पार ताको परफॉर्म करि पारिबा आमे. सेताले सपोज 5टी बा 2टी बा 3टी मॉड्यूल अछि. एवरी मॉड्यूल को आमे इंडिपेंडेंटली स्वाधीन भाव में कंप्यूटर रन करि परिबो. किछ असुविधा नै. से जगह जदि 3टी सीपीयू थिबो एवं टास्क को 3 भाग कर दिहला, प्रत्येक भाग को प्रत्येक सीपीयू जेता परफॉर्म कले एकाथरे काम सरी जिवो ना. बहुत कम समय भितर जॉबटा परफॉर्म हो जिवो ना नै. बहुत जो कम्प्लेक्स टास्क होची रिसर्च एंड डेवलपमेंट केस रे जो R&D केस गुड़ी सब कर साइंटिस्ट मैंने जो रिसर्च कर मल्टीपल टास्क सब आसूँ. हाँ से क्षेत्र में कौन होची जे से भली मल्टीपल टास्क को डिवाइड कर दिया होची. सॉरी हम कौन कहते गोटे टास्क को मल्टीपल मॉड्यूल डिवाइड कर दिया होची. एंड एवरी मॉड्यूल कैन एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर इंडिपेंडेंटली. से समय जब मल्टीपल सीपीयू थे तो 3टी सीपीयू रहिले. ओके एंड 3टा सीपीयू रहिला आपन गुटिए टास्क मल्टीपल टास्क नुहे गुटे टास्क रो 3 प्रकार मॉड्यूल रहिला. मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 कर देले ताकू इंटीग्रेट कर साला परे आमे गुटे टास्क पाइछन. क्लियर? एंड मॉड्यूल 1 इज executed by the CPU 1 and module 2 is executed by the CPU 2 and module 3 is executed by CPU 3 simultaneously एकाथरे होची. जदि को आमे 1 by 1 आमे रन करि थांते 1 by 1 एग्जीक्यूट करि थांते जति समय लागि थांता ता ठारू बहुत कम समय एटा हे जीवो ना नै. तो एठी कहि परिया टू इंप्रूव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर द मल्टी प्रोसेसिंग कांसेप्ट इज देयर. The multi-processing operating system allows the multiple CPUs or multiple processor, and multiple processors are dedicated to perform multiple jobs simultaneously, and every job can be or every part of that job can be executed independently. तो बुझी पारछो ना नहीं. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करूची मल्टीपल सीपीयू बा मल्टीपल प्रोसेसर को हैंडल करूची.
एंड मल्टीपल प्रोसेसर आवश्यकता कहीं रोचे द मल्टीपल प्रोसेसर कौन करुँच गोटे कम्प्लेक्स टास्क को मल्टीपल सेक्शन ले डिवाइड कर मल्टीपल पार्ट रे डिवाइड कर मल्टीपल पार्ट डिवाइड कले एव्री पार्ट प्रत्येक प्रत्येक गोटे गोटे पार्ट सीपीयू द्वारा गोटे गोटे सीपीयू द्वारा कौन है एक्जिक्यूट है जिते तीनोटी सीपीयू एट ए टाइम परफॉर्म करुँच एट ए टाइम वर्क करुँच से कौन हम इन ए वेरी लेस ऑफ टाइम we can get our result. So here multi-processing operating system is why multi-processing operating system is here to improve the speed of the computer system. Clear? This kind of operating system is known as the multitasking operating system. Another kind of operating system is real-time operating system. ये बाबत डिटेल्स मु आउथर पढ़ेबी आउथर मु नोट देबी ओके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम what is real time operating system. This kind of operating system you can find in company to process the payroll, okay, accounting, this kind of huge scale of data processing case ram real time operating system pauchandi. Another operating system is embedded operating system. Embedded operating system OS. I mean generally oven वाशिंग मशीन यही जो कथार जो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी अच्छे ना वाशिंग मशीन कौन करुचे आम साली दे सारापर आम गोटे टाइम फिक्स कर दौरान से टाइम भितर सफा करुचे सी एवं किसी जगह भी ड्राए कर वाशिंग मशीन छाड़ुचे तो आमको ता भर आउ किसी करा पड़ूनी आम केवल वर्क देदेले आम चुपचाप बसिले सी तार इंटेलिजेंस अनुजाई ही लुगा सफा करुच्ची. तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आउ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को मुझे डिटेल्स को मुझे केतले है ये जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आम कौ जगह यूज कर वाशिंग मशीन ओभेन ये जगह एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कराऊँगी सी रम रे ही थाए रम रे ही रखा जाऊँगी एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली पेरोल अकाउंटिंग केस रे यूज कराऊँगी आउ अदर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तुमको ये बतईदेली. हाँ आम ये पाइबा डॉस इज द एग्जांपल. DOS is one type of example. Single user and single tasking operating system. Single user and multitasking operating system आम Windows को पाई जाउछन्ती. मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम Windows को पाई जाउछन्ती. एटा को आम पाई जाउछन्ती एटा कोन लेखा होछि गोटे लाइनेक्स ना कोन गोटे लेखा होछि ठीक रो एटा मने पड़नी देखिबा. मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रो गोटे एग्जांपल देबी. एठिया को आम लिखि परिया Windows ओके Unix, Linux, एटा या नेम टा गोटे अलग टाइप रोची. दिस इज द Linux, LINUX, Unix, Windows. These are the multi-user and multitasking operating system. Clear? For today's session, students, this all. Thank you. स्टूडेंट्स किसी डाउट अच्छे कि किसी डाउट अच्छे कि